A very good evening, students. So today we'll be discussing about CSS application that will be filing for financial aid that we are seeking from the universities. So obviously not all universities are participating in CSS. There are very few universities that would be participating in CSS, and especially for international students, not all universities have need-based financial aid. In order to check what universities are offering need-based financial aid, you can do this simple thing. There's a list. Just a moment, I'll show it to you. So I've kept the session on recording. In case you guys miss any of the information, you can recheck it. You can see the entire video. You can see if certain information or part of things were missed. So this is basically CSS participating university list. In this list, you can see that. I'm sorry. I hope my screen is visible to everyone, right? So within this list, you can see that all the universities are there. And here I can see that all the universities that are offering CSS Profile to domestic students, it is given to us. And all universities offering CSS Profile or CSS Aid, financial aid to international students, it's given here. So I'll just select yes to see what all universities are offering financial aid. So all of you have already received your university list, right? So in that list also, you can check if your university is coming in CSS financial aid or not for international students. So here is the comprehensive list of universities that are accepting aid for international students, right? US में सारी universities international students को financial aid apply नहीं करने देती हैं. So most of the Ivy Leagues have financial aid for international students. A lot of liberal arts colleges have financial aid for international students, and many nationally ranked good universities have financial aid for international students. So here I can see a lot of big names. Johns Hopkins is there, right? MIT would be there. Harvard is there. New York University is there. So आपको आपकी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज के हिसाब से यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं. वो आप आगे CSS के फॉर्म पे करेंगे. This I'm showing you just to check whether your university is falling under CSS or not. आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, is that accepting aid from international students? In order to check that, आपको यहाँ पे देखना है एक बार, right? So let's come to, I hope you guys have already started filling your CSS profile. बहुत सिंपल सा फॉर्म है. कुछ चीजें उसकी कॉम्प्लिकेटेड है, which we'll be discussing today. But most part of it is pretty straightforward. Just a moment. So आपके जितने भी डाउट्स हैं आप लोग मुझसे आज पूछ सकते हैं. मैं आपको एक क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ. व्हाट एग्जैक्टली इज CSS फॉर्म, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगता है. And then whatever queries you guys have, you can ask me. So this is your CSS profile. Once you have filled all the required information, this is the page it would be showing you. All that basic information, it would be asking you about your name, address, your parents' details, right? So वो सारी information बड़ी simple है, आप लोग fill कर सकते हैं. It will even ask you your school status, high school status, कि आप 12th में हैं कि 12th graduate कर चुके हैं. Graduate is the term which they use in US as a standard term for passing any of the classes. So do not assume that graduation means just bachelor's or post-graduation degree. They use frequently this term in order to say, I graduated my 12th grade. So that means you have passed your 12th examination. So graduation उनके लिए pass जैसा term है. ठीक है. हम लोग usually जब भी graduation सुनते हैं, we assume that it's about undergrad degree or postgrad degree, which is not the case. So आपसे ये सारे normal questions पूछे जाएंगे. जब आप वो सब कुछ fill कर देंगे, तो you'll come to this page of application checklist in which 16 fields are required to be filled, right? ये आप देख पा रहे हैं 16 fields हैं जो required हैं, जो आपको fill करनी है. I think the first 5-6 fields are straightforward to fill. For example, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह के questions पूछे गए हैं quickly. So I've already filled this information for someone.
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी फिल्ड है। तो ये बड़ी बेसिक डिटेल्स है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछा हुआ है, यहाँ आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाले। ठीक है, योर ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, marital status of the student. So citizenship status, for most of you, it has to be other. If for some student, your green card petition is going on or it's under process, consult with me in order to choose the right option. But for most of us, it's going to be other. Country where Sukratin lives, the student, so it would be India. Visa type that is required for Sukratin is F1. Is Sukratin going with a legal dependent? A legal dependent is somebody who is dependent on the student, right? कि जिसका खर्चा और बाकी चीजें ये स्टूडेंट पे कर रहा है, वो स्टूडेंट का लीगल डिपेंडेंट होगा. So in most of our cases there is no legal dependent. In fact we are dependent on our parents. ठीक है, बट ये क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है कि आप किसी पे डिपेंडेंट है, ये पूछ रहा है आप पे कोई डिपेंडेंट है क्या. So I will be selecting no. Then they are asking the normal address and all. Now this question is asking you कि आपके पास कोई CB financial aid ID already generated है. So we all are filling this form for the first time. In all of our cases, this has to be blank. We don't have to fill anything. Right? Then again, normal details they're asking. They're just asking us to confirm everything we have already filled. तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. They'll be asking you about your parents. मैं एक बार शो भी कर देता हूँ क्या पूछा गया था. सो पेरेंट्स का नाम, रिलेशनशिप, राइट. What is the marital status of parents? For most of us, it's going to be married, and you can choose whatever option applies to you, your case. What country does Sukritin parents live in? So it has to be India. What is Sukritin's grade level for the 22-23 academic year? So these students who are currently in 12th grade will be choosing 12th, right? अगर आपका स्कूल खत्म हो गया and you are in gap year, you would be choosing not in school, right? Do not choose first year undergrad, second year undergrad, third year. They'll assume that you have already entered college. You are in the first year of your college studies, which is going to hamper your chances of getting financial aid, because universities have different consideration of financial aid for the freshman students and for transfer students. You guys are freshman students. आप पहली बार कॉलेज अटेंड करने जा रहे हैं तो आपको फ्रेशमैन स्टूडेंट्स ट्रीट किया जाता है. आपके लिए एड एंड स्कॉलरशिप इज प्रीटी डिफरेंट कंपेयर टू ट्रांसफर स्टूडेंट्स. सो गलती से भी इसमें से कोई और ऑप्शन ना सिलेक्ट करें. इफ यू हैव टेकन गैप ईयर, you're going to choose not in school, right? Most of you would be choosing 12th grade. The next question is about your current high school information. So this time surprisingly, पहले जो CSS फॉर्म होता था उसमें काफी सारे schools होते थे इंडिया के जो आइडेंटिफाई हो जाते थे. But this time I cannot see a lot of our schools in the list. So एक तो ये states हमारे लिए applicable नहीं है because all of these are American states. So none of the above option आपको select करना है. Then वो आपको school name यहाँ पे enter करने को बोलेगा. जो भी आपका स्कूल का नाम है आप full enter करें उसको. Then go to search option. Then it will show not listed, right? My school is not listed. Choose that option, right? So most of our cases, the school name is not given and we have to choose school not listed. अगर आपको अपना स्कूल दिख जाए लिस्टिंग में तो आप चूज वो करें. अगर लिस्टिंग में नहीं दिखता है, so you'll be choosing school not listed. So I've already selected this, so I'm going forward. In between आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, या मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं उसके बाद आप अपनी क्वेरीज पूछिएगा. So amount Sukritin received in scholarship and grants. If you have not received anything, you can leave this blank, right?
amount Sukritin's parents paid towards Sukritin's education for 22 to 23. That means आपकी स्कूल की जो इस साल की फीस गई है वो आपको पे बतानी है, राइट? कि आपके एजुकेशन पे इस साल कितना खर्चा हुआ है. सो इफ योर स्कूल फीस 2 लाख रुपीस, यू आर गोइंग टू एंटर ऑल ऑफ दीज अमाउंट्स इन INR. सो अगर वो आपकी 2 लाख है तो आप वो अमाउंट डालेंगे. अगर इससे कोई अलग आपका फिगर है तो आप वो एंटर करेंगे. Make sure you're counting all zeros. In past, this has happened with students जिन्होंने अपने जीरो काउंट नहीं किए एंड द अमाउंट वाज प्रीटी डिफरेंट. ठीक है, वो 2 लाख का 20 लाख हो गया या उससे कम फिगर हो गया. तो आप मेक श्योर कर लेना कि आप अपने नंबर्स को काउंट कर रहे हैं. So now this is asking you to add your universities, right? If you have already shortlisted the universities which are coming under CSS profile, you can simply select those universities. So for example, I'm applying to, let's say, Cornell. I've already selected Drexel University for the student. So Cornell के भी आपको अलग अलग दे दिए हैं. Cornell University में are you applying to the wet school? You are applying to School of Law or the regular Cornell University. So you can select all your universities from here. अच्छा, अच्छी बात यह है कि इस फॉर्म में अगर आपने अभी कुछ फिल नहीं किया है तो यू कैन ऑलवेज मूव फॉरवर्ड एंड यू कैन कम बैक टू दैट प्लेस. सो डू नॉट वरी. अगर आपके पास लिस्ट अभी प्रिपेयर्ड नहीं थी और यू वर नॉट श्योर व्हाट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज यू वांटेड टू अप्लाई टू फॉर CSS फाइनेंशियल एड, you can always come to this page later on, right? So let's move forward. I've selected a couple of universities from here. So 2 universities it is showing, Drexel and Cornell. Akshat, कोई query है क्या आपका? So now they're asking more questions about Cornell University, right? So Cornell is asking in 23-24, what would be your status? So I'll be first year undergrad student in 23-24 year who has never previously attended college. As I said, this question is very important because they have different consideration for freshman students and transfer students when it comes to aid. So I'll be selecting this. If there is some ID which has already been generated on your mails, you might have started receiving the IDs from the university, right? उनके पोर्टल का एक ID and password आपको आ गया होगा मेल्स पे, जितनी यूनिवर्सिटीज आपने अभी तक अप्लाई कर दी है in early action and early decision. Keep checking your emails. In fact, keep your notifications on your mobile phones for your Gmail or whatever email services you're using. But make sure that you're not missing out on these emails. Universities, once you have completed the Common App, you have submitted your applications through Common App, they are going to send you ID and password to log into their portal, in which you can see if some documents are missing or some more information is required, some more documents needs to be uploaded. You can just go to that portal and finish off that thing. तो वो आप लोग इंश्योर करते रहिएगा. तो वहीं से आपको कोई आईडी भी अगर जनरेट हो गया है तो आप आईडी डाल सकते हैं. आपके मेल्स पे आ जाएगा that Drexel University has generated your student ID, so you can enter that ID. In case you do not have assigned ID, you can leave this field blank. Akshat, कोई problem नहीं. As I said, if your list of universities is not there, you can still start filling out this form because we'll be applying to a couple of universities where financial aid is there for international students. So even if you do not have your list of universities, you can start filling up this form, right? क्योंकि यूनिवर्सिटी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं. जो मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी का सेक्शन था जस्ट पहले, उस पर हम बाद में भी जा सकते हैं, राइट? सो वी कैन ऐड दोज यूनिवर्सिटीज लेटर ऑन. सो रैंडमली आप ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो. अगर ऐसा है तो जस्ट सिलेक्ट वन यूनिवर्सिटी. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. So if assigned ID is there, you would be putting up that. What are your housing plans? I would suggest for now, choose on campus. Are you applying to the school regular decision, early action? So whatever your status is, if you have applied to that school in regular decision, you would choose this. Most of us have applied to the universities in the early action, we'll choose this. If you have selected any of the universities in early decision, you're going to select this option. So I've updated the information for Cornell University and now I can move forward. What currency will you complete? So I would suggest that choose INR for the simple reason your calculations would become little easy.
आप डॉलर में करेंगे, बार बार कन्वर्जन करेंगे, कुछ मिस्टेक हो सकता है कन्वर्जन करने में, राइट? सो ऑलवेज सिलेक्ट इंडियन रुपी एंड एंटर ऑल फिगर्स इन INR. Like they asked us what your parents have paid for your school fee, वो हमने INR में अमाउंट फिल किया है, जो 2 लाख का अमाउंट है that is in INR. So we'll be selecting Indian rupee and all the figures which would be coming now, they would be reflected in Indian rupee. तो आपके लिए easy है आपके text form से figures को absorb करना, enter करना. This would become easy for you. So choose Indian rupee. सो ये पेरेंट्स की डिटेल्स आ रही हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका कोई ईमेल एड्रेस है. नाउ दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, सो मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स हैव सम वैलिड ईमेल एड्रेस. Highest level of education completed. So for most of us, it could be college and university beyond. If certain students they have parents who have not gone to college, you can choose high school or whatever applies. For most of us, it is going to be college, university, or beyond. Similarly, for parent two, they'll be asking similar details for Sukratin's mother, and I'll move forward. अब यहाँ से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी जो समझना बहुत जरूरी है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग. Sukritin parents file a federal tax return for 21. Now US financial year is December to January, which is not the case in India, right? हम लोग 31 मार्च टू अप्रैल, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हम लोग काउंट करके चलते हैं. तो उनका फाइनेंशियल ईयर काउंट अलग होता है. जब ये लोग 21 कहते हैं, सो 21 मीन्स जिसको हम लोगों ने अभी मई जून में फाइल किया था, अप्रैल मई में हमने फाइल किया होगा, वो हमारा 21 ईयर कहलाएगा. ठीक है. सो फॉर मोस्ट ऑफ अस टैक्स रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड फॉर ईयर 21. किसी के पेरेंट्स ने अगर डिले किया या अभी तक फाइल नहीं किया है, सो आप अकॉर्डिंगली एस्टिमेटेड डालेंगे. या अगर पेरेंट्स को रिक्वायर्ड नहीं है टू फाइल, यू आर गोइंग टू चूज द थर्ड ऑप्शन. फॉर मोस्ट ऑफ अस इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑप्शन. फॉर पेरेंट्स हु हैव नॉट filed their income tax, they'll be going for estimated current tax return and will file. कि हम लोग अभी लेट फाइल करने वाले हैं उसको, मे बी दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, बट वी आर गोइंग टू फाइल इट. सो फॉर मोस्ट ऑफ अस इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड करंट टैक्स रिटर्न. सो आपके पेरेंट्स ने जो अप्रैल मई में फाइल किया है वो आपका कंप्लीट करंट टैक्स है फॉर 21. अगर लेट फाइल किया है विथ लेट फी, तो आप उसके हिसाब से आगे का देखेंगे. So what type of tax return did Sukritin parents file? So other non-US tax returns. From these options, I'll be selecting other non-US tax returns. अब हमें इनका कहना है कि आप ITRs में से चीजें निकाल लें जो यहाँ पे फिल करनी है. How much did his parent one, which means father has earned from work. तो ITR में जो ग्रॉस इनकम होती है वो आपको एंटर करनी है. ITR के फर्स्ट पेज पे आप देखना, जो इंडियन ITRs हैं उनकी बात हो रही है स्पेसिफिकली. अ ग्रॉस इनकम सेक्शन इज मेंशन. सो ग्रॉस इनकम आपको नेट इनकम नहीं देनी है, ग्रॉस इनकम देनी है. ग्रॉस इनकम वो होती है जिसमें कोई डिडक्शंस नहीं किए गए. ठीक है. सो ग्रॉस इनकम इज दिस वन. 8 लाख रुपीज वी हैव एंटर. आपके टैक्स फाइल में जो भी दिखेगा आप वो फाइल करेंगे, राइट? आपके पेरेंट्स के टैक्स ITRs में जो दिख रहा है, यू हैव टू फाइल दैट फिगर ओवर हियर. Similarly, for parent 2, if she's working, you're going to put that amount. If parent 2 is not working, you'll be putting zero amount over here. आप यहाँ zero enter कर देंगे. So for now, in Sukratin's case, his father is 8 lakh rupees and mother is 4 lakh rupees. So this is reflecting on their gross income of ITR, and वहीं से ये figures pick किए जाएंगे. Now they are asking enter the following amounts for Sukratin parents for 21. If the country's tax year does not allow this. तो हम आगे देख लेते हैं क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया है. So total compensation from employers required, total compensation including wages. अब ये दोनों पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है. तो what I'll do is that parent 1 and parent 2 का जो इनकम हमने पीछे लिखा था, I'll add that and the total figure that I would be getting is 12 lakh rupees. 8 plus 4. No, I'm sorry about it. Total compensation include wage. So it's going to be same. Right. हाँ सेम आएगा. जो हमने पहले लिखा है वही फिगर यहाँ पर आने वाला है.
Now they're asking if you have earned any interest income. For example, somebody who has got a good amount of fixed deposits, and on that he's earning some kind of interest income. You're going to put that over here. If there's some dividend income coming from equity and shares, we would be putting that here. For most of us, these fields are going to be blank. हमारे यहाँ usually interest income ऐसा रहता नहीं है, डिविडेंड इनकम भी नहीं है, तो हम इनको ब्लैंक छोड़ दें. पर अगर आपके आईटीआर्स में ये रिफ्लेक्ट होता है, आपके पेरेंट्स के आईटीआर्स में डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सो अकॉर्डिंगली यू विल बी पुटिंग अप दीज फिगर्स हियर. Now they're asking net income from business or partnership required, right? अच्छा, अब सीएसएस फॉर्म में एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ फिगर्स डुप्लीकेट हो जाते हैं. यानी अगर मैं यहाँ पे 12 लाख वापस लिखता हूँ, सो इट वुड शो दैट वो 12 लाख की भी इनकम आती है और यहाँ पे अलग से कोई 12 लाख की इनकम आती है, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट द टोटल फिगर ओवर हियर. अगर मैं 12 और 12 कर रहा हूँ, तो उनको फिल करना है ना आयुष. इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम है आपके आईटीआर्स में, तो जो वो स्पेस दी गई थी पीछे, वो आपको फिल करनी पड़ेगी आयुष. क्लियर है? So they are asking net income from business or partnership. So if I repeat the amount, अक्षत आगे आएगा इसका क्वेश्चन, मैं आगे क्लियर कर दूंगा आपको कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो क्या सिलेक्ट करना है. ठीक है, दोनों में से कोई एक ही फिगर को हम भरें, मेरा ये कहना है कि या तो उधर जीरो करके इधर पे हम वो इनकम डाल दें, राइट? या फिर वहां पे पहले हमने अगर 8 और 4 मेंशन कर दिया है तो मैं वापस उसका टोटल यहाँ पे ना लिखूं, right? In this case, I'll make it repetitive. They'll assume it's 12 plus 12, which means 24 lakh rupees, right? So duplicacy हो जाती है, तो किसी भी एक को आप फिल करो. So यहाँ पे मैंने सब 0 0 कर दिया है. Net income from rental real estate, royalties, estate or trust, net income from farms. ठीक है? Now just remember that CSS form is not to show that we have sufficient funds. हमें ये नहीं दिखाना है हमारे पास बहुत फंड्स हैं, वो हमें बाद में टू यूनिवर्सिटी दिखाना है जब हमें अपनी I-20 और वीजा प्रोसेस करनी है. दैट टाइम वी हैव टू रिफ्लेक्ट वी हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर देयर एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस. नीड बेस्ड प्रोफाइल वी आर फिलिंग अप इन ऑर्डर टू आस्क फॉर सम काइंड ऑफ एड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. हमें कुछ उनसे एड चाहिए, तो हमें बहुत सारे फिगर्स को कंजर्वेटिव रखना है. ठीक है, तो मे बी आपके पास एक्स्ट्रा रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज हैं पेरेंट्स के पास, आपकी कोई फार्म इनकम बहुत अलग से भी आती है, बट आप उसको ना शो करें अगर आपके फिगर्स ऑलरेडी हायर साइड पे हैं. हायर साइड फिगर्स क्या होते हैं? व्हेन पेरेंट्स की कंबाइंड इनकम इज मोर देन 20 लाख रुपीज, इट इज कंसिडर्ड टू बी हायर साइड. 25 30 लाख रुपीज के अगर फिगर्स आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को लगता है वी हैव सफिशिएंट फंड्स, और अगर फंड सफिशिएंट है तो यूनिवर्सिटी हमारी एड रिड्यूस कर सकती है. ठीक है, उसको देखते हुए माई एड कुड बी रिड्यूस्ड. तो ज्यादा दिखाना अच्छा नहीं होता है नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड के लिए, सीएसएस फॉर्म के लिए. इफ यू थिंक दैट आई शो मोर अमाउंट ऑफ मनी इट्स गुड फॉर मी, विच इज नॉट द केस, राइट? आप सीएसएस फाइल ही कर रहे हैं फाइनेंशियल एड के लिए. आईफोन 12, आप अपना नाम रीनेम कर सकते हैं उसमें स्क्रीन पे. आई एम नॉट श्योर हु एग्जैक्टली इज दिस. जी जी सर, मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ ताकि आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ पाएं. जस्ट अ मिनट. So sir has a question that if I show income lesser than ITR, सर इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि certain universities later on they ask you to upload the ITR documents. The first page of income tax return they might ask you. Not all universities, but some universities might ask it. So it's better if we show income according to the ITR. ठीक है, अब उस केस में एक हमारे पास है सोल्यूशन कि अगर आपके ITRs हायर साइड पे हैं तो इसमें एक एक्सपेंसेस का कॉलम आने वाला है. आप वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस ज्यादा बताइए, right? Living expenses, housing expenses, loan, many kind of expenses you can show and reflect over there. तो अगर आपकी इनकम हायर साइड पे है तो आप एक्सपेंसेस बढ़ा के जो डेफिसिट हो रहा है या नेट अमाउंट बच रहा है उसको हम छोटा करने की कोशिश करेंगे.
आयुष ITR इनकम वही जो मैंने सर को अभी रिकमेंड किया, भूमि के फादर को मैं जो रिकमेंड कर रहा था अभी, सेम गोज फॉर यू. अगर ITRs आर गोइंग अबव 30 लाख रुपीज, इन दैट केस अगेन वी हैव टू शो दैट इनकम इज लेस. या इस केस में आप लोग एक चीज और कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक ही पेरेंट का इनकम दिखाइए, फिर सेकेंड पेरेंट की इनकम मत दिखाइए. If your ITRs are crossing 25-30 lakh rupees when two parents' incomes is being combined, so in that case, remove one of the parents to reduce that. सिर्फ एक ही पेरेंट की इनकम दिखाइए, बट फिर आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपने कॉमन ऐप पे यही रिफ्लेक्ट किया है. कॉमन ऐप पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एम्प्लॉयड नॉट एम्प्लॉयड फॉर योर पेरेंट्स, राइट? So in that case, you have to ensure that you have filled same information, otherwise it would create discrepancy. तो कॉमन ऐप पे भी वही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए. बाय एनी चांस अगर अब वहाँ आपने एम्प्लॉयड दिखा दिया है दोनों पेरेंट्स को और अब आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, सो इन दैट केस माय सजेशन इज दैट ट्राई टू इन्फ्लेट ऑल द एक्सपेंसेस. जब एक्सपेंसेस का कॉलम आए तो वहाँ आप अपने खर्चे बढ़े हुए दिखाइए, ताकि जो डिफरेंस अमाउंट है वो लेस देन 10 लाख रुपीज आए फॉर मोस्ट ऑफ यू. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एड फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज, try to show that your income minus expenses is less than 10 lakh rupees. But if you would like to increase your chances of getting into certain universities, like this year, 2-3 students are aiming for good Ivy League universities. अब अगर वो फाइनेंशियल एड बहुत ज़्यादा मांग लेंगे तो उससे उनके चांसेस भी कम हो रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एड मांगने से आपके चांसेस भी कम होते हैं. ये बहुत श्योर बात है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नीट, सारी तो नहीं है पर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज आर नीट अवेयर, नीट ब्लाइंड नहीं है. दैट मीन्स योर फाइनेंशियल एड वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन इट कम्स टू गिविंग यू एडमिट, कि आप कितना पे कर पा रहे हैं वो देखेगी यूनिवर्सिटी, एंड दैट वुड बी अ फैक्टर इन योर एडमिशन प्रोसेस, राइट? तो अगर चांसेस बढ़ाने हैं, एड कम मांगिए. बट इफ इट्स अ सेफ स्कूल फॉर यू, you know that on your credentials this school is going to give you an admit, in that case आप नीड बेस्ड एड को बढ़ा दीजिए. क्लियर है ये चीज? सो अभी सबको जीरो रखा गया है, आगे बढ़ जाते हैं हम. If there is some kind of other taxable income, you have to report it over here, which I am leaving blank. Pension, annuity, retirement distribution, you all should be leaving this blank. यहाँ दोनों जगह पे आप जीरो रखिएगा. कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड है भी नहीं. All taxes, mandatory withholdings and set aside paid or withheld include income taxes, state taxes. So आपके सबके ITRs में, पेरेंट्स के ITRs में लिखा होगा कि कितना इनकम टैक्स पे किया है. कि अगर 5 लाख रुपीज इनकम थी तो उस पर जो भी अमाउंट का इनकम टैक्स पे किया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, कि क्या टैक्सेस आपने पे किए हैं. तो जो भी आपका टैक्स अमाउंट हो, मैं अभी यहाँ पे एक रैंडम फिगर डाल रहा हूँ, that Sukratan parents have paid 15,000 rupees as income tax for the year. ठीक है, ये दोनों पेरेंट्स का मिला के, इसमें किसी एक पेरेंट का नहीं पूछा है. सो देव गिवन all taxes mandatory for both of the parents, so I am putting the amount 15,000 rupees. कि दोनों पेरेंट्स ने ये मिला के इनकम टैक्स फाइल किया है, सॉरी टैक्सेस पे किए हैं. यहाँ आ जाएगा इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न 2020. So in this section, they are asking, enter the total amount Sukratan parents received in 21 for the following. So कोई एलिमनी रिसीव हुई पेरेंट्स को, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो मैं यहाँ जीरो लिख देता हूँ कि नो एलिमनी वाज रिसीव. एलिमनी इज सेपरेशन जब होते हैं कपल्स या पेरेंट्स, तो एक पेरेंट जो दूसरे पेरेंट को अमाउंट पे करता है उसको एलिमनी कहा जाता है आफ्टर सेपरेशन, फॉर कंपनसेशन, फॉर मेंटेनेंस, राइट? So in most of our cases, that is not coming. So we are going to fill that as zero. Income from other members of their household. तो आपके पेरेंट्स को किसी और से कोई इनकम मिलती है, यानी उनके ब्रदर से, जो आपके अंकल हैं उन लोगों से, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से. सो आई वुड बी सजेस्टिंग इवन इफ दैट इज द केस, यू स्टिल फिल जीरो. अगर मिलता भी है तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है, राइट?
Housing, food, and other living allowances received as membership of the military. For most of us, this amount is going to be zero. Money given to them paid on their behalf, zero. Other untaxed income, including but not limited to workers' compensation and untaxed disability benefits. For most of us, this is going to be zero. Enter the amount Sukritin's parent receive or expect to receive in 22 for the following. So Eunice, it's up to you. They do not know that both of your parents are filing ITR, right? So even if you would like to skip one of the parents, and आप वो तभी करिए जब income 20 lakhs plus cross कर रही है for both of the parents, and you are aiming for maximum scholarship, maximum financial aid from the universities. So in that case, remove one of the parents, right? उनको नहीं पता है कि आपने ITR कितने लोगों का फाइल किया है घर पे. Enter the amount Sukritin's parents received or expect to receive in 22 for the following. So now, if you remember, a similar question was asked to us, but about the 21 year. Now they're asking us for the 22 year. That means coming year. तो ये projected amount है. तो projected amount है तो हमने पहले अंदाजन आप लिख दीजिए. जिनके पेरेंट्स की सैलरीज है उनके लिए तो बहुत सिंपल है ये फील्ड को फिल करना. जो बिजनेस है उसमें आप लगभग अंदाजे से भर दीजिए कि अगर किसी का बिजनेस है तो लास्ट टाइम 8 लाख का आपका ATR फाइल हुआ है तो इस साल का आप आने वाले साल का you can file something as 8,50,000. Similarly, यहाँ पे भी कोई मैं एक रैंडम फिगर लेके आसपास का चल रहा हूँ, which is 4,40,000. Other taxable income, zero. Untaxed income and benefits, zero. Was Sukritin's parent 22 income significantly impacted due to COVID-19 pandemic? If yes, please provide details in these special circumstances. I am choosing right now, no. And going forward. Do Sukritin parents expect a significant income change in 23 due to new job, job loss, retirement? क्या बहुत बड़ा fluctuation आने वाला है? हमने 8 का 850 बताया, which is not a big fluctuation, right? If that is the case, आप yes choose करिए. For most of us, I would say no ही जाने वाला है. ठीक है कि significant change in income नहीं होने वाली है. Due to new job, job loss, retirement, benefit changes, something like that. We'll ask questions about Sukritin parents' employment and their retirement plans. What is? अब फादर का पूछा गया है तो किसी ने मुझसे पूछा था अभी कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वो कहाँ सिलेक्ट करना है. दिस इज द प्लेस. So in this case, I'm choosing self-employed. If they are employed by a company, you're going to choose employed by others. For आप अपने हिसाब से ये देख लीजिएगा कि क्या आने वाला है. अभी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड लेके चल रहा हूँ. सिमिलरली मदर के लिए भी पूछा जाएगा. What is Vijay's occupation? So try to type the entire occupation. आप सिर्फ ऐसा मत लिख दीजिए he's a proprietor, right? Owning a business. उनके business को थोड़ा सा समझाने वाला डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना चाहिए. ठीक है कि for example, somebody's father is into grain trading. तो मैं grain merchant डाल दूंगा. तो वो थोड़ा सा डिस्क्राइब होने वाला जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. जो भी उनका ऑक्यूपेशन है दैट शुड लुक लाइक कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्या ऑक्यूपेशन है. ठीक है. तो ऐसी बेसिक टर्म्स मत डाल दीजिएगा कि इज अ बिजनेस ओनर, अ प्रोप्राइटर, राइट. हाँ, आपसे आपकी कंपनी का नाम आयुष और वो सब पूछा होगा, उनका डेजिग्नेशन इन द कंपनी. ये तो हमने अभी क्योंकि सेल्फ वाला किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन पूछा है. सिमिलरली जब हम उस पे जाएंगे, मैं एक बार करके भी दिखा दूंगा आपको, या तो दोनों करके दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. Where does Vijay work? So his father's name of the firm and company would come. How many years has Vijay worked there? So जब से उनका बिजनेस है वो आ जाएगा, राइट. तो जो भी उनका है विजय सेल्स कॉर्पोरेशन करके जो भी है फर्म, मैं ये रैंडम नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे. हाउ मेनी इयर्स? 11 years he has worked here. क्लियर है ये चीज?
Which retirement plan? ये retirement plan हम पे एक भी applicable नहीं है, so we are going to choose other type of the plan and we'll save it. Right? Current value of Vijay's tax deferred and after tax retirement pension annuity. This is going to be 0 for all of us. इस पे कोई amount ना डालें आप, 0 लिख दीजिए इसको. Now similarly they are asking for Sukratin's mother. उनका क्या status है? ठीक है. अब मैं पीछे चले जाता हूँ to solve Ayush query in which he was asking if the parents are not self-employed, what fields would be coming? So they are employed by others, right? Which is employment status employed by others. Now let's move forward. So similar questions are coming, Ayush, right? So उनका occupation में उनका profession आ जाएगा, जो भी वो करते हैं, he is chartered accountant, ठीक है, या जो भी उनका है, civil engineer. Where does Vijay work? His name of the company would come, and for how many years he has been working there, you will be putting same information. Clear ये चीज? ये सब zero आएगा, other type of plan, and rest of the things would be coming as 0. Similarly, they are asking for Sharmila's employment status. Let's say she is employed by others. So maybe she's a school teacher, right? So she's working with DPS Indore. I'm sorry. High school teacher is the occupation and DPS Indore is the name of the organization. 7 years she has been teaching there. Again, for her also, other type of plan and rest of the figures would come as 0. Sukritin and parents' permanent address are same. So for most of us, this is going to be same, right? We'll choose yes. Then जो भी address है वो सब यहाँ आ जाएगा. Which best describes your family's housing situation? So are you living with others? So we all have just one home, जिसको हम select कर सकते हैं, right? Living with others, rent home, housing provided by employer. For most of us, this is not going to come. If that is the case, आप accordingly अपने option select कर लीजिएगा. So own home आ जाएगा यहाँ पे. Tell us Sukritin's parents' home, about Sukritin's home purchase year. तो आपके parents ने वो home कौन सी year में purchase किया था? So let's say they purchased it in 2013. Home purchase price. So एक अंदाजन price डाल दीजिए. Nobody is going to do a background check if the prices are matching or not, or nobody is going to ask you for property sales deed documents in order to verify this information. So approximate amount आप डाल दीजिए उस time के हिसाब से कि 2013 में he bought the land for जो भी amount है 25 lakh rupees I'm putting up here. And current market value. As I said, that CSS financial aid form we are filling up in order to ask for aid from the university, right? Financial aid हम demand कर रहे हैं, तो आप बहुत inflate करके property का rate मत बताइए that it's about 5 CR, which would give an impression that student has sufficient collateral value in order to take huge amount of education loan. वो उस तरह का impression जा सकता है. तो आप बहुत बड़ा value मत बताइए. आपको बताना है 80 लाख, 90 लाख, 1 CR, it's fine. In this case, I'm putting something as 95 lakhs. Total amount owed on home. तो अगर कोई इसका loan चल रहा था, ठीक है, some debt is going on the home. We have taken some kind of loan, तो वो यहाँ पे mention करना है. अगर loan है भी और आपको नहीं बताना है तो कोई problem नहीं है. You can just enter 0 over here. ठीक है, क्योंकि वैसे ही हम लोग ये prices को conservative बता रहे हैं. ठीक है, हम बहुत इन्फ्लेट नहीं कर रहे हैं या उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहे हैं. मे बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस हाउस नाउ इज 5 CR. अब आप उतना रखना चाहते हैं तो आप जरूर लोन का अमाउंट यहाँ पे रखिए. अगर उस पर कोई लोन लिया गया था प्रॉपर्टी पे तो कितना बचा है वो यहाँ पे आप डालिए. बट एज आई सेड, वी आर गोइंग टू गो विद कंजर्वेटिव फिगर्स. हमको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है. What is the amount owed on the primary mortgage for Supratin parents' home? So again, they are asking for
क्या मॉर्गेज वगैरह है जो कि हम बता ही नहीं रहे हैं कि कोई लोन है, तो हम जीरो रख रहे हैं इसको. व्हाट इज सुकृतिन पेरेंट्स मंथली हाउसिंग पेमेंट? प्रिंसिपल इंटरेस्ट डू नॉट इंक्लूड इंश्योरेंस. दिस इज अगेन गोइंग टू बी जीरो. हम ऐसा कोई हाउसिंग पेमेंट नहीं कर रहे हैं. Which best describes Sukritin housing situation? Own home, right? Mm, repeated question क्यों आ रहा है? Just a moment. Okay, the previous question was asking about the family housing situation, in which we said we have own home, and then they started asking all those questions, right? Now, which best describes Sukritin's housing situation? So in this case, I think in this case, because they are asking specifically for the student, which best describes Sukritin's housing situation. In this case, if I again say own home, it's again going to take all those figures, the value of the property, and the repetition of information is going to come. ये इस साल आपका CSS form change हुआ है from the last year. This was not the case last year. So again, they are asking, पिछले में parents का पूछा था. Now this time they are asking about Sukritin's housing situation. So if I say own home, again they are going to ask for the value of the home, and those figures would be taken into two terms. यानी वो दो बार add होने वाला है. So I think live with others should come here. And in description, I can mention right. So I can say I live with my parents and they own the house. So in this case, हम वो repetition of figure से बच रहे हैं. नहीं तो अगर मैं हाउस का बार बार वैल्यू डाल रहा हूँ तो दिल काउंट दैट एज टू प्रॉपर्टीज, वन ऑन द स्टूडेंट्स नेम, द अदर वन इन द फैमिली नेम. Now they'll be asking questions about child support. Did Sukritan parents receive child support? So in India, we don't have this concept of receiving child support. So it's no. Pay child support. Are they paying child support to somebody else? No. All these questions would be no. More complete picture of your financial situation. Now this is very important section. जैसे आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे आईटीआर हायर साइड पे हैं, तो उसको आप कैसे कंजर्वेटिव लाएं, राइट? हमारी इनकम्स अगर बड़ी हैं तो आप एक्सपेंसेस बड़े दिखा के उन इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं. Does Sukritin parents have any medical or dental expenses not covered by insurance? So again, if you have
figures on the higher side 25-30 lakhs, I think you should be selecting this कि आपके कुछ इंश्योरेंस में मेडिकल और डेंटल एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं, आप उसको यस करिए और वहां पे भी कुछ एक्सपेंसेस शो करते जाइए कि आपके कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं किसी टाइप के जो कवर नहीं होते हैं आपके। हाउ मच मेडिकल डेंटल, तो आप यहाँ पे कोई बड़ा फिगर डाल सकते हैं कि आपके कोई डेंटल या मेडिकल एक्सपेंसेस हैं जो कवर नहीं हो रहे हैं। तो जस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट गैप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस यू कैन इंक्लूड सम बिग फिगर्स। फॉर स्टूडेंट्स जिनके आईटीआर नॉर्मल जा रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत फिल करिएगा ये। बट फॉर दी अदर स्टूडेंट्स जिनके इसमें रिक्वायर्ड हो गया है कि दोनों पेरेंट्स का दिखाना है, उस केस में आप यू कैन चूज दिस। फॉर नाउ आई एम चूजिंग नो एंड आई एम गोइंग फॉरवर्ड। Now, do Sukratin parents have the following expenses? Repayment of any college loan debt in 21. I think for most of us, this is going to be no. Repayment of any college loan debt in 22. Some alimony they are paying? No. Tell us how much your family spends on these household expenses. So utilities they are asking. So आजकल utilities consist of electricity, water, internet. So internet is going about 1,500. Electricity bills nowadays is coming about 5,000 to 6,000 a month, right? So आप मिला के कुछ 8-9 हज़ार टाइप का expenses देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे वो yearly expenses पूछ रहा है, ठीक है? Provide the annual, not monthly amount. So if I'm assuming it's 10,000 a month, I'm going to put a figure of 1,20,000. Food for everyone in the home, that includes your grocery, your vegetables, everything that is coming to your house. So let's say about 12 to 15,000 you are spending on that. अब ये figures आपके inflate हो जाएंगे based on income tax that you are filing. If your income taxes are on higher side, आप इन figures को बढ़ाइए। इनका जो total आएगा आपका amount, मैं आपको उसका थोड़ा सा एक calculation करना सिखाता हूँ। मैं पहले ये figure fill कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। For example, food for everyone home, monthly grocery and vegetable expenses I'm saying is about 15,000 a month. So that would be 1,80,000 a year. Clothing for everyone in the home, I'm saying that this is going to be roughly 2 lakh rupees, 1,50,000. Full necessities include personal care items, cleaning supplies, toiletries and all. उन पे आपका कितना expenditure चला जाता है? So if I say roughly we spend 1,500, 2,000. So let's put a figure of 80,000 here. तो अब आपको make sure ये करना है कि आपके जो expenses हैं सारे, including your school fee which you have paid, the information they asked at the onset of your CSS. आपसे पहले ही पूछ लिया गया था कि आपके स्टार्ट ऑफ CSS में पूछा था कि आपकी स्कूल की फी क्या जाती है, राइट? तो वो मिला के और आपके एक्सपेंसेस मिला के it should not cross your income. In this case, Sukratin parents combined income is 12 lakh rupees. So all expenses and school fee, if I combine that, it should not cross 12 lakh rupees. Otherwise, it would look unreasonable, illogical. कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है ये सारे खर्चे उठाने का, राइट? अब ये गैप कितना होना चाहिए दोनों के बीच का, इनकम और एक्सपेंसेस का गैप? दैट शुड बी 6 to 8 lakh rupees. That means if 12 lakh is the income, I should show the expenses and school fee somewhere around 4 to 5 lakh rupees. So the gap would be of 7 to 8 lakh rupees. ये सारे एक्सपेंसेस मेरे मिला के 4 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं करने चाहिए। ये मुझे मेक श्योर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जिसकी इनकम 30 लाख रुपीस पे जा रही है, in your case you have to ensure that your all expenses are coming to 22 lakh rupees in order to create that gap and deficit of 8 lakh rupees. क्लियर है ये चीज? तो उसके लिए आप मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा शो करिए, आप आगे लोन वाले क्वेश्चन पूछेगा वहां शो करिए. If there's something you were not able to explain, there is a special circumstance section at the end of CSS profile where you can put the expenses जो आपसे नहीं पूछेगा, कहीं भी नहीं पूछेगा. तो आप उन एक्सपेंसेस को आप अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं कि उनके मेडिकल और उनके जो केयर है वो कवर नहीं होती हमारे इंश्योरेंस प्लान्स में. सो वी पेड फ्रॉम द पॉकेट. सो दैट किसी के ग्रैंड पेरेंट्स का हो सकता है डायलिसिस चल रहा है,
कोई और मेडिकल केयर चल रही है विच इज एक्सपेंसिव इन नेचर, मंथली मेडिकेशंस, ऑपरेशन, प्रोसीजर, उसका कॉस्ट हाई हो सकता है। तो इस तरीके की कई चीजें हैं जो आप आखिरी में सर्कमस्टांसेस में शो कर सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड सर्कमस्टांसेस, जो कहीं नहीं बता पाए आप। So Akshat has a query. Is 8 lakhs, so is it fine to enter the amount or should I have अक्षत देखो, ये तो सीधी बात है कि अगर सीएसएस हम फिल कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल एड मैक्सिमाइज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप इनकम लो दिखाते हो तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू दैट यूनिवर्सिटी वुड डिक्रीज. So in this case, if you are aiming for highly ambitious universities, for example, your scores on SAT is about 1400, you are aiming for university जिसका एक स्टैंडर्ड एडमिशन में ही 1520 1530 कट ऑफ जाता है सैट का, प्लस प्रोफाइल बहुत एक्सेप्शनल जाती है, मे बी सारी आईवी लीग्स अगर आप देखोगे तो इस तरीके का जाता है. तो वहां पे अभी टू मेक द कट वी डू नॉट हैव सफिशिएंट सैट स्कोर, और मे बी इन दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफाइल वी आर लैकिंग, राइट. तो जब आप उसको नीड भी डाल देते हैं तो आप अपने चांसेस फर्दर रिड्यूस करते हैं अक्सर. ठीक है, तो यूजुअली सीएसएस हम कहाँ फाइल करने को बोलते हैं, जिन यूनिवर्सिटीज में हमारे स्कोर्स कॉम्पिटिटिव हैं टू गेट, right? A university that usually accepts students with a score of 1250, 1300, right? So over there, with a 1400 on SAT, if you're filing CSS financial aid, you're a better student for them, right? So in this case, they are going to give you sufficient amount of financial aid. तो इस तरीके से CSS वर्क करता है. तो जो आपका क्वेरी है कि अमाउंट सफिशिएंट होगा कि नहीं, so it totally depends on the universities you would be targeting, right? So once your SAT scores are there, I'll be in better position to tell you what those universities would be. ठीक है, कहाँ आपको CSS रखना है, कहाँ नहीं रखना है, वो मैं बताऊंगा आपको. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. Tell us how much your family spends on these other expenses. So transportation to and from work, that means your fuel expenses of cars and everything. So आजकल usually 15 to 20,000 जा रहा है फ्यूल में, कंबाइन सारे घर की व्हीकल्स का, तो आप उस हिसाब से अमाउंट डाल सकते हैं. ठीक है, इन दिस केस बिकॉज 12 लाख का अमाउंट है तो हमें वो भी मेक श्योर करना है कि हमारे एक्सपेंसेस 4 लाख प्लस ना जाए, तो मैं यहाँ पे ईयरली 2 लाख ही डाल रहा हूँ अभी, या मे बी 1,50,000, सो दैट combining all expenses the deficit should be something like 8 lakh rupees, 8 to 9 lakh rupees. Other expenses जो आप नहीं explain कर पाए वो यहाँ mention कर सकते हैं. Make sure कि अगर आपने other expenses में कोई amount डाला है तो special circumstances में उसको mention ना करें. It would be repetition of those figures. आपको कोई duplicate information नहीं रखनी है. अगर आपने यहाँ expense डाल दिए तो special circumstance में मत डालिए, special circumstances में mention है तो यहाँ पे मत mention करिए. तो अभी मैं 0 कर रहा हूँ अदर एक्सपेंसेस करके. तो उनकी अलग टाइप की वैदिक है ना स्कॉलरशिप. ये तो जहाँ सीएसएस एक्सेप्टेबल है वहां हम फाइल कर रहे हैं, जहाँ पे वो फाइनेंशियल एड नहीं लेती हैं वहां वो स्कॉलरशिप के बेसिस पे आपको देंगी. उनके पास इंस्टेंट ट्यूशन होंगी, राइट, मेरिट स्कॉलरशिप्स होंगी जिनके बेसिस पे आपको आएगा. करंट अमाउंट इन कैश, सेविंग्स, चेकिंग एंड डिपॉजिट अकाउंट. सो दे आर आस्किंग कि पेरेंट्स का बैंक में बैलेंस कितना है, राइट, जो उनके सेविंग्स अकाउंट है, नॉट द करंट अकाउंट्स, राइट, द सेविंग्स अकाउंट ऑफ पेरेंट्स जो पेरेंट्स के नाम से है. दैट मीन्स इन दिस केस विजय जो इनके फादर हैं उनके नाम का जो अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस रहता है. तो अगेन इफ द बैलेंस इवन इफ इट्स ह्यूज 50 lakhs 70 lakhs, आई वुड सजेस्ट यू टू रिफ्रेन एंटरिंग दैट काइंड ऑफ अमाउंट. आप वहां पे भी यहाँ पे भी कंजर्वेटिव अमाउंट ही डालिए. जैसे मैं स्टूडेंट के केस में 5 लाख रुपीज एंटर करूँ. Nobody is going to go and check what kind of amount you are savings or you are keeping in your savings account. So it's fine. In this case, I'm putting up 5 lakh rupees. Next वो मुझसे पूछेगा कि हमारे कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं. ठीक है, so investments include real estate beyond the primary home. So again we are asking for maximum amount of financial aid, तो हमें नहीं दिखानी चाहिए हमारी second real estate, second property, no कर देनी चाहिए. Own or operate a business that is primary income or is addition to other work. So in this case, all these students who have chosen self-employed, आपके पेरेंट्स अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप इस पे यस करेंगे. ये पूछ रहा है आपसे कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो ओन करते हैं किसी बिजनेस को दैट इज प्राइमरी इनकम सोर्स in addition to other work, so you'll be choosing yes. Own a farm, part of a farm, no.
assets they own but are held in the names of their children. कि assets है लेकिन सुकृतन के नाम पे ली गई है, तो हम इसको नो मेंशन कर रहे हैं बिकॉज हमने एक रियल स्टेट बता दिया है. Just ITR, sir. The first page of your ITR. So number of business owned or operated. All the students self-employed जिनके parents हैं, one. If your mother and father are running two different business, separate ITRs are going, and you are showing both of them as employed in your CSS profile, you will be choosing two businesses, right? So parent के business क्या है? Name of this business is जो भी है, Vijay Trading. If there are more business, you would be selecting add business, otherwise you'll move forward. Tell us more. So address of the business they are asking, right? Proprietorship, partnership or corporation business. So ये आप अपने parents से check करवा सकते हैं, ठीक है? In this case, I am choosing sole proprietorship. Primary product or service this business provides. So give a description of what services you are providing. Now they're asking who is the parent who owns this business, right? So in this case, I'm saying Vijay. Percentage, if it's a sole proprietorship business, it's 100% business. Date his business was started. Nobody is going to check these information. ये आपके ITR में भी reflect नहीं होती, तो अंदाजन आप डाल सकते हैं. Even if your parents do not remember the exact date of the business, that's fine. ठीक है, मैं random dates put कर रहा हूँ यहाँ पे. Does this business employ more than 100 full-time employees? No. Even if it does, and you're seeking maximum financial aid, you have to choose no. Do other family members have ownership in this business? No. Current market value of this business, parents portion. So market value is basically if your business में जितनी assets use हुई हैं, furniture, fixture, machineries, उन सब का एक value निकालें और उस business को आज बेचना हम चाहें, तो what would be the expected market value of the business, right? With all of those things. So again, you don't have to inflate the figures. Even if it's a big empire and big business, जिसको sell करने पे शायद 25-30 CR आ जाएगा, आपको इतने इन्फ्लेटेड और बड़े फिगर्स नहीं बताने हैं बिकॉज यू आर सीकिंग फाइनेंशियल एड, यू हैव टू शो कंजर्वेटिव फिगर्स. सो आप एक अंदाजन अमाउंट डाल सकते हैं अपने बिजनेस का कि उस बिजनेस की वैल्यू क्या है. इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है आपको दैट मार्केट वैल्यू इज द प्राइस ऑफ द बिजनेस कुड बी सोल्ड फॉर टुडे, इंक्लूड ऑल असेट्स इन द बिजनेस, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, report only your parents portion of the current market value. So in this case, this his parent being grain merchant, मैं एक रफली फिगर डाल रहा हूँ कि उनके बिजनेस का वैल्यू आज की तारीख में 1.9 करोड़ का है, राइट? समथिंग लाइक दैट. So I'm putting that figure, which is normal figure for a business. Current amount owed on this business, parents portion only. Is there some kind of debt or loan going on this business, right? This is what they're asking. Some personal consumer, ये loans नहीं करने, पर कोई mortgage and related debts हैं, वो हमें डालनी है. We'll put that as 0. On which tax form is the income for this business reported? Now all of these forms are not for us. So we'll choose other, enter form type in additional information below.
ग्रॉस रिसीट्स फॉर दिस बिजनेस इन 21 पेरेंट्स पोर्शन ओनली। अब ये बिजनेस वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है कि हम ग्रॉस रिसीट्स कैसे बताएं। तो मैं एक बहुत सिंपल सा आपको फॉर्मूला समझाता हूँ कि रिसीट्स का मतलब होता है, आप जिस भी बिजनेस में है या सर्विसेज के आप बिजनेस में या प्रोडक्ट के बिजनेस में है, आप उसमें जितना साल भर में सामान बेचते हैं दैट इज योर ग्रॉस रिसीट्स। सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस सुकृतिन पेरेंट्स, हिज फादर विजय इज अ ग्रेन मर्चेंट। तो साल में जितना ग्रेन बेच देते हैं वो उनकी ग्रॉस रिसीट्स है। ठीक है, साल में हो सकता है वो 15 CR का ग्रेन बेच देता है, विच डजंट मीन दैट 15 CR इज हिज इनकम, राइट। तो मैं यहाँ पे 15 CR डाल रहा हूँ, और ये फिगर बड़े भी हो सकते हैं, तो इससे आप वरी मत करिएगा, क्योंकि आगे आपसे एक्सपेंसेस भी पूछा है। तो इतना का सामान में मैं बेच लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 15 करोड़ इज माई इनकम। माई इनकम इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रॉस रिसीट्स माइनस द एक्सपेंसेस दैट आई हैव इनकर्ड ऑन दैट बिजनेस, क्योंकि आई एम डिपेंडेंट ऑन वन बिजनेस फॉर द इनकम, राइट। जैसे स्किल मैस्ट्रो है, स्किल मैस्ट्रो में जितने स्टूडेंट्स मैं साल के एनरोल कर रहा हूँ और सर्विसेज दे रहा हूँ वो हम लोग की ग्रॉस रिसीट्स हो गई, राइट। But I am also incurring some expenses to run this organization, rental, salaries and other kind of expenses. So वो deduct करके जो मेरे पास आता है that is my net income, sorry that is my gross income which goes on my ITR। तो जो आपसे पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उसके हिसाब से ये आंसर होने वाला है। जैसे हमने इनकम शो करी थी 12 लाख रुपए, राइट, बोथ ऑफ द पेरेंट्स, अगर वो दोनों इस बिजनेस का हैं। और अगर ये सिर्फ फादर का मैं बता रहा हूँ तो फादर का फिगर मैंने 8 लाख रुपीज डाला था। तो माई ग्रॉस रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस दैट शुड फेच मी अ फिगर ऑफ 12 लाख रुपीज, सॉरी 8 लाख रुपीज। ठीक है, जिस भी पेरेंट का आप ये इनकम दिखा रहे हैं जो भी है, अगर मैं इसको डाल देता हूँ 15 CR, ठीक है, 15 CR का फिगर डाल दिया है। तो अब मुझे इसमें से -8 लाख रुपीज कर देना है, वो मेरा एक्सपेंसेस हो जाएगा। ये -8 का फिगर कहाँ से आया है? एट दी स्टार्ट हमने इनके फादर का, विजय का, ITR पे जो इनकम है वो कितना बताया था? 8 लाख रुपीज। सो आई एम डिडक्टिंग दैट 8 लाख रुपीज फ्रॉम 15 करोड़, एंड फ्रॉम दैट आई एम गेटिंग वॉट एवर फिगर आई एम गेटिंग, आई विल बी पुटिंग अप हियर। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ये स्पेशली बहुत डिफिकल्ट फील्ड है फॉर मेनी स्टूडेंट्स, स्पेशली हुज पेरेंट्स आर इनटू बिजनेस। उनको बहुत प्रॉब्लम होता है ये वाला फील्ड भरने में। तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि ये क्या है। जितने का ईयर में हमने सामान बेचा, दोज आर योर ग्रॉस रिसीट्स, बट यू ऑल्सो इनकर्ड सम एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू डू दैट बिजनेस। सो योर receipts minus expenses should show the figure that comes on your ITR। अगर आपका ITR 15 लाख रुपीज का जाता है तो आपका receipts minus expenses should reflect that figure। क्लियर है? अभी मैं ऐसे ही 0 0 करके आगे बढ़ रहा हूँ। Do other family members receive a salary or wages from this business? No. Parent business salaries for Vijay Trading Corporation. So do other families पे तो no कर ही दिया हमने। नेक्स्ट विल आस्क अबाउट सुकृतिन्स इनकम। सो भले ही आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है या कुछ चलता भी है, सो आई वुड हाईली एडवाइज अनटिल अनलेस आपने कोई अपना स्टार्टअप और ये सब रिफ्लेक्ट नहीं किया है, तो उस केस में, और प्लस आपने कोई टैक्स फाइल नहीं किया है, तो उस सारे केसेस में नॉट फाइल्ड एंड नॉट रिक्वायर्ड आना चाहिए। आप सबके केसेस में इट शुड कम नॉट फाइल्ड नॉट रिक्वायर्ड। यू विल नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट दिस। अब ये डॉक्यूमेंट यूजुअली यूएस का रहता है, हमारे पास नहीं होता है। हाउ मच डिड सुकृतिन अर्न इन 21? सो एज आई सेड कि स्टूडेंट ने कुछ अर्न नहीं किया है, तो उस केस में हम इसको 0 लिखने वाले हैं। Tell us more about income received by Sukritin in 21. Again, I'll be putting 0 because this information is about the student. In this section, we'll ask question about additional income Sukritin received in 21.
सो अगेन एज आई सेड कि स्टूडेंट की इनकम तो जीरो ही दिखानी है हर जगह पे आपको, आपको दिखाना ही नहीं कि आप कुछ अर्न करते हैं. टेल अस मोर अबाउट अनटैक्स्ड इनकम रिसीव्ड बाय सुकृतिन. जीरो, जीरो. Enter Sukritin's expected income for summer 23, zero, zero. All of these figures would come as zero. How much does Sukritin expect to receive from following source to pay for education expenses for 23-24 academic year? This is very important question. They're asking कि अगले साल जब सुकृतिन कॉलेज जाएगा तो पेरेंट्स कितना अमाउंट देने को तैयार हैं, right? So provide the best estimate of what the students' parents completing this application plan to pay for the students' educational expenses, tuition fee, book supplies, room board, transportation, सब type के expenses में. So usually students who are seeking maximum financial aid from their safe list of universities, the amount you should enter is between 8 to 10 lakh rupees. इसके अराउंड का आपको डालना चाहिए कि इतना मेरे पेरेंट्स डालने को तैयार हैं या देने को तैयार है. ये अगर आपको मैक्सिमाइज करने अपने चांसेस उसके लिए है, ठीक है, इन योर सेफ यूनिवर्सिटीज. बट इफ यू आर एमिंग फॉर एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जांपल somebody who is applying to Johns Hopkins, somebody applying to Cornell University, and you would like to increase your chances of getting into that university, increase this figure. तो आपका ऑब्वियसली फाइनेंशियल एड रिड्यूस आएगा. लेकिन अगर वो आपकी एकदम ड्रीम यूनिवर्सिटी है प्लस आपकी प्रोफाइल से ऊपर थी वो, तो आप अपने चांसेस थोड़े से बेटर कर रहे हैं बाय इंक्लूडिंग अ बिगर अमाउंट. तो somebody who is comfortable in paying 25 लाख रुपीज अ ईयर, जिसके पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं फॉर अ बिगर हायर रैंक यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे 25 लाख डालेंगे. जिनको मैक्सिमम स्कॉलरशिप चाहिए इन सेफ यूनिवर्सिटीज, दे आर गोइंग टू एंटर अ फिगर विच इज अबाउट 10 लाख रुपीज, 8 to 10 लाख रुपीज. क्लियर है ये चीज? बट इससे देखिए एक नुकसान है, एक फायदा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ. कि जब मैंने 25 लाख रुपीज एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू मैक्सिमाइज माई चांसेस ऑफ getting into Cornell University, where I am seeking need-based financial aid, and I am comfortable if Cornell gives me good amount of financial aid, जहाँ पे सिर्फ मेरे पेरेंट्स को 25 lakhs contribute करना पड़े, तो आई एम प्रीटी कंफर्टेबल विद दैट, राइट? तो मैं अपने चांसेस तो बढ़ा रहा हूँ कॉर्नल में जाने के विद द इंक्रीज्ड अमाउंट. बट एट द सेम टाइम व्हाट वुड हैपन इज माय CSS प्रोफाइल is going to go to all my safe universities also. So if at the same time I'm aiming a university like Drexel, which was safe on my profile, तो अब ड्रेक्सेल को भी ये अमाउंट दिख रहा है कि इसके पेरेंट्स साल का 25 लाख अफोर्ड कर सकते हैं. इस केस में मेरा एक नुकसान है. नुकसान ये है कि ड्रेक्सेल मेरी फाइनेंशियल एड रिड्यूस कर देगा. कॉर्नेल मेरे जाने के चांसेस तो बढ़ रहे हैं by increasing this amount, but at the same time my financial aid from Drexel is going to get reduced. तो ये चीज आप डिस्कस मुझसे भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंगली आप ये फिगर एंटर करिए, क्योंकि जो आपने यहाँ फिगर एंटर किया वो सारी यूनिवर्सिटीज को दिखने वाला है. यू कैन नॉट चेंज दिस फिगर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी. बट इफ यू आर सीकिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एड एंड स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी ऑफ द सेफ यूनिवर्सिटीज, तो आप कुछ 10 लाख टाइप का अमाउंट डालिए यहाँ पे कि 8 से 10 लाख मेरे पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है. एनी स्कॉलरशिप ग्रांट्स विच वुड बी कमिंग, विच वुड बी सपोर्टिंग यू, इन आवर केसेस इट शुड बी नो, जीरो. एम्प्लॉयर्स, I'm sorry, my connection got disconnected. I hope you guys are able to hear me now. Again, as I said, total amount Ayush, if you're trying to maximize your chances for scholarship for financial aid, in that case, आप 10 लाख रुपीज का ही कंट्रीब्यूशन बताओ पेरेंट्स का, किसी और का बताओ भी मत कंट्रीब्यूशन, ठीक है. फ्रॉम एम्प्लॉयर्स would some amount would be coming, so we'll put this as 0.
relatives other than parents, are they going to contribute? Put that amount as 0. ठीक है, बाद में आपकी फी कहाँ से आती है, यूनिवर्सिटी का कंसर्न बिल्कुल नहीं है वो आयुष. So even if your relatives are going to contribute to your fee, you don't have to worry about it. Will Sukritin receive funds from the government for college expenses? No. Will Sukritin receive funds from any agencies or foundations for college expenses? No. Will Sukritin receive tuition benefits? ये भी नो आ जाएगा. How will Sukritin for transportation to the US? Actually ये गलत लिखा हुआ है. How will Sukritin pay for transportation to the US होना चाहिए. So parents income and savings. To give more complete picture of financial situation, we need to know about some of the Sukritin's expenses. How much child support did Sukritin pay in child support in 21? 0. कि स्टूडेंट ने किसी के लिए चाइल्ड सपोर्ट पे किया है क्या? So it should be 0. How much medical and dental expenses not covered by insurance did Sukritin pay in 21? Again 0. What type of assets you own? So again we are trying to maximize our financial aid. हम इन सब में 0 या not available ही चूज करेंगे, या हम कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करेंगे. ये पूछ रहे हैं स्टूडेंट के पास खुद के कोई एसेट्स हैं, स्टूडेंट के पास खुद के कोई कैश सेविंग्स हैं, राइट? तो वी आर सेइंग 0. Does Sukritin own any retirement assets? No. Select all circumstances that have ongoing financial impact on your family. So in the cases where amount is on higher side, the ITR or the income is on 25-30 lakhs and you would like to maximize your chances of scholarship, in that case आप इसमें से कोई एक ऑप्शन में चूज करके अपने expenses बढ़ा सकते हैं. It could be exceptional medical or dental expenses. It could be about change in employment, elder care, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो घर में उनकी केयर के लिए कोई एक्सपेंस जा रहा है, राइट? और अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जो यहाँ दिख नहीं रहे हैं. सो अगर आप अपने एक्सपेंसेस वहाँ पे पूरे नहीं बता पाए हैं and you would like to further inflate those expenses in order to reach that figure of 8 to 10 lakh rupees of deficit, so here is your option for that. So now you can see the entire CSS profile is complete. I can see all green check, right? This is what CSS profile is about. So अब आप लोगों की responsibility ये है कि for most of you, if you have applied for early action, early decision, your deadlines of submitting CSS form is before 15th of November. तो अब आप एक एक करके अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करिए and give your login credentials, share it with संजना मैम, and I'll be reviewing it just like common app जैसे रिव्यू हुआ था वैसे आपका CSS प्रोफाइल भी रिव्यू होगा. और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं. The students who have already filled their form, if you have any doubts related to the income expenses column, what should come there, या special cases कुछ हैं आपके, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Vedic has a question. Only Whitworth offers CSS among all the 10 universities. So should I also fill? बिल्कुल करना है वैदिक आपको. अगर आपकी एक भी यूनिवर्सिटी आ रही है जो CSS में आती है, तो you have to fill this form. This is for all students. Regular decision के लिए जनवरी तक है अक्षर to fill the CSS form. 10th and 15th January for most of the universities CSS का deadline है. देखिए यहाँ आपको दिखाता भी है कि कब तक सबमिट कर देना है. Priority filing date. So I can see for Drexel University, if somebody has applied for early action, because I selected early action, I've applied for Drexel. So it is showing me that 15 November 22 is the deadline to file my CSS.
Clear है? Any other question you guys have? Anything you want to know, understand? अंशिका, अपूर्व, आयुष, खुशी, पंकज, पूजा, भूमि, कोई भी क्वेरीज आप लोगों की हैं जो आंसर नहीं हो पाई हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अंशिका, यूनुस, राइट वैदिक, मैं आपको बताते चलूंगा उसके लिए. तो सर आप अपने हिसाब से उसको फिल कर दीजिए, उसमें कुछ डाउट आएगा तो आप मुझे पूछ लेंगे. राइट, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि क्या अमाउंट आने चाहिए, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे. आयुष, इट ऑल कम्स टू कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ तक पहुंच रहे हैं. आयुष की क्वेरी है कि सिबलिंग के एक्सपेंसेस हम हायर साइड पे बताएं कि उसे कम कर दें. सो अगेन आप वो देखो कि आपका जो टोटल इनकम का फिगर है और टोटल एक्सपेंसेस का फिगर है उसमें डिफरेंस कितना जा रहा है. अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है, difference is about 10 lakhs plus, so then add sibling education and put it on higher side. मैं एक बार चेक करके भेजूंगा आपको बताता हूँ. ठीक है, CSS profile से related any other queries? So make sure that if your universities are there in CSS financial aid, so make sure आप ये फॉर्म फाइल कर दें टाइम से, स्पेशली फॉर द यूनिवर्सिटीज जहां आपने अर्ली एक्शन में अप्लाई किया है. उन सबका मेजोरिटी का डेडलाइन इज बिटवीन 15 to 20th November. Right, for early action, early decision. The students who have applied in regular decision, आपके पास दिसंबर एंड या जनवरी तक का टाइम रहेगा. अगर वो ITR पे मेंशन होती है अंशिका, जो आपके फादर का एक ITR जाता होगा ना, उस पे आप देखो कि ये इनकम आ रही है क्या, क्योंकि ये इनकम अलग अलग नहीं होती है. अगर आपकी इनकम कोई रियल स्टेट से भी आ रही होगी ना अंशिका, तो इट वुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर फादर्स ITR प्रोफाइल. जो ITR आपका फर्स्ट पेज होता है, सॉरी आगे कंप्यूटेशन पेज होता है ना, उसमें आपके फादर को किन किन सोर्सेज से इनकम आती है वो सब मेंशन होता है. अगर उनके 3 बिजनेस हैं तो उन 3 बिजनेस से इनकम, कोई उनकी रेंटल शॉप्स चलती हैं वहां से कोई इनकम, राइट, तो वो सारी आपके फादर के ITR में रिफ्लेक्ट होती है. तो कुछ अलग से नहीं आएगा. आप एक बार उनसे पूछना अंशे का कि जो उनका नेट ITR है उसमें क्या इनकम दिखती है. उसमें ये सारे सोर्सेज ऑफ इनकम दे आर कवर्ड यूजुअली अंशे का. तो ये तो बहुत बड़ा फिगर हो गया आयुष. ऑब्वियसली इतना बड़ा बताओगे तो आपका फिर बाकी चीजें कवर हो पाएंगी कि नहीं. ठीक है, आप वही देखो कि आपका ये प्लस आपके जो एक्सपेंसेस आप बताते हो मिला के टोटल फिगर क्या होता है. अगर वो फिगर आपका इनकम को क्रॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको इतना बड़ा फिगर नहीं बताना चाहिए आयुष. दैट वुड लुक नॉट रियलिस्टिक. Your expenses should not cross your income. The difference that you should be keeping, the ideal difference that you should be keeping between your income and expenses is about 8 to 10 lakh rupees for maximum scholarship in your safe universities. If you are aiming for dream universities, high ranked universities where you can pay more, in that case, you can change this figure something like 20 to 25 lakhs a year. But at the same time, do consider that your safe universities are going to reduce your financial load. Clear है? So I hope the session was helpful and you guys would be filling your entire CSS form and will be getting it reviewed from me before you make a submission of that. ये पूरा session आज का recorded है. Very soon I'll upload this and Sanjana ma'am is going to share the link with you guys. So while filling the form, if you face any issue, you can refer to this entire video. Clear है? Any question you guys would like to know and ask? So thank you so much, students. I would look forward to get your CSS login ID details and मैं एक बार वेरीफाई करके जब ओके कर दूं उसके बाद आप सब लोग सबमिशन कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन.